go make an Instagram ID, you make a Facebook ID, and you do this. All kind of distractions. This is very difficult for parents to give something. जब हम गांव में रहते थे तो मेरे फादर के जो रिलेटिव्स हैं, मौसी जी जब आती थी दिल्ली से, तो बात करते थे उनके बच्चे DPS और अच्छे स्कूलों की। तो आजकल सर मेक इन इंडिया का नारा बहुत जोर से चल रहा है। ये डिकेड माना जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स का डिकेड होगा। हम लोग स्कूल से ही कैसे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं या स्किल के ऊपर कैसे? विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। Knowledge is supreme wealth. We are with a teacher, a guru, who chose the noble profession of education over a very sophisticated, successful software engineering job almost 22 years ago. We are with Puneet Vashishtha, principal of G D Goenka Public School, Agra. Welcome, sir, to the podcast. Thank you so much. Thank you so much. Sir, it has been a journey, I'm sure, changing from a software engineering job to becoming a teacher, now being a CBSE appointed district training coordinator. It has been a journey. Do you feel proud of all the decisions you've made so far? Yeah, I'm really satisfied and I feel proud of all the decisions which I have taken. And as you said, it's a journey. Actually, it's a journey. And I'm born in a very humble background. I born in a village. Till class 8th, I was in the village only in a Sarkari school. And it happens with almost in all the families. Children are, their decisions are taken by the parents. At that point of time when we were in I think 20 years, 25 years back, it was actually a tradition. Now things have changed completely. Even the children are given this liberty, they can take their decisions. But at our point of time, most of the decisions were in the hand of the parents. And that is right also, because उतना एक्सपोजर हम लोगों के पास नहीं था. I was a good student of math science, so in a class 12th I was given maths and science. और शायद यही कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे कि जो जानकारी में थे पेरेंट्स को भी, उनको भी ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था. सो एक छोटा सा टाउन है मेरे विलेज के पास, मैं वहाँ पर पढ़ा भारतीय इंटर कॉलेज में इन यूपी बोर्ड. ग्रेजुएशन के लिए आई वॉज सेंट टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर SD कॉलेज, मैंने वहाँ से किया. बट अगेन द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ. फैमिली बैकग्राउंड बिकॉज थोड़ा सा टिपिकल था, तो देयर वाज इश्यूज ऑफ फाइनेंस, तो बहुत बड़े कोर्सेज के बारे में हम सोच नहीं सकते थे. तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसी को लिया. एंड ये भी प्रॉब्लम्स थी कि पहले ये कल्चर था कि जैसे मेरे ब्रदर मेरे मामा जी के यहाँ रहकर पढ़ते थे, और आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मुझे कहीं अच्छी जगह भेज दिया जाए जहाँ मैं जाकर पढ़ सकूँ. बट फिर भी मुझे चांस मिला कि मैं मुजफ्फरनगर पढ़ा क्लास ग्रेजुएशन तक. देन आई रियलाइज दिस मे नॉट हेल्प मी इन फ्यूचर. I should change my line, because that point of time the computer was basically one of the major sector for the children, but it was not available for everyone. Very costly. Even a small diplomas in a computer is very very costly. मेरे याद है कि एप्टेक एक इंस्टीट्यूट उस समय आया था, उसका एक कोर्स ऑफ 8 month 9 month 70,000 का था. इट वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर ऑल ऑफ अस. तो प्रॉब्लम्स थी उस समय, और फिर सेक्टर चेंज किया वहाँ से. और सेक्टर चेंज करने के पीछे भी एक कहानी है. अब मुझको टीचर बनना था, और मेरे फादर चाहते थे कि मैं आई शुड गो इन इंजीनियरिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शन, बट मेरे को टीचर बनना था. उसके पीछे भी एक वजह थी कि जब हम गांव में रहते थे तो मेरे फादर के जो रिलेटिव्स हैं, उनकी मौसी जी जब आती थी दिल्ली से, तो बात करते थे उनके बच्चे DPS और अच्छे स्कूलों की. मेरे लिए भी पैशन था कि आई शुड स्टडी इन दैट स्कूल, बट इट वाज नॉट एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन लाइक अस. तो मैं अपने फादर से रिक्वेस्ट करता था कि दादी जी से एक बार बोल दो कि वो मुझे अगर अपने साथ ले जाएं, और आई कैन ऑल्सो स्टडी इन दिल्ली पब्लिक स्कूल. बट ये पॉसिबल नहीं हुआ. व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तो मैं एसेंट न्यूज़पेपर एक दिन पढ़ रहा था, तो उसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल का मैंने एक इश्तहार, एक एडवर्टीजमेंट देखा. तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड हु वाज सीनियर टू मी कि ये
कौन से एडमिशन्स हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजी, दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये कोई एडमिशन्स के नहीं है, दीज आर द बेसिकली फॉर वैकेंसीज। तो किस चीज़ की वैकेंसी, तो मैंने उसमें पढ़ा है, कंप्यूटर वैकेंसी निकली हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ नहीं पाया इस स्कूल में, कोशिश करते थे पढ़ाने की। जी, तब आप सर अपना जॉब कर रहे थे? नहीं, आई वाज इन बीएससी दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बीएससी है, बीएससी में था। और फिर मैंने उसमें एक्सप्लोर करने का कोशिश किया कि कैसे हम कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, बट कंप्यूटर के लिए देन आपको स्टडी, यू हैव टू स्टडी कंप्यूटर्स। तो सारी चीज़ों को सोचना पड़ा, और देन वी टुक अ डिसीजन कि चलो वी हैव टू लीव द दिस प्लेस एंड वी शिफ्टेड टू द एनसीआर। और फिर वहाँ जाकर आई हैव डन माय मास्टर्स इन कंप्यूटर। और लकीली कुछ दिन बाद ही I got a job, government job in UTI Bank, और it was a very a prestigious moment for all of us in the entire family, क्योंकि एक अच्छा खासा amount 25-26,000 rupees, a child like me who was coming from a very humble background at that point of time. Yeah, it was a very huge amount. Yeah. Everybody was happy, but I was not happy, क्योंकि मुझे तो टीचिंग में जाना था। जी। फिर भी मैं पैरेलली along with the bank job, I was taking tuitions in गाजियाबाद, होम ट्यूशंस में लेता था वहाँ पर, और एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी बनाया था। विद इन 3 months आई गोट द अपॉर्चुनिटी ऑफ माई स्कूल जहाँ मुझे जाना था, एंड आई वर्कड देयर 9 years, and whatever I am today, just because of that school only, because if that school has not given me that kind of environment and the culture, I would have not come to the G D Goenka. उसके बाद 2011 में I got the opportunity to be part of this prestigious G D Goenka brand, और हमारे लिए भी एक्चुअली से ड्रीम स्कूल, क्योंकि जब हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे तो वी यूज्ड टू थिंक यार दिस इज अ विच स्कूल जिसमें बच्चे कर्टन लगी गाड़ियों में आते हैं, एसी स्कूल है, yellow bus. yellow bus, and a school where the food is given to the children. It was such a big name in the NCR. तो we used to think कि कभी इस स्कूल में काम करने का मौका मिले, and God is so kind, मौका मिला। ये स्कूल जब 2011 में स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे से मैं यहाँ पर हुआ, वेरी वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका दिया गया कि इस ब्रांच को मैं आगे बढ़ाऊँ। सो थैंक्स टू ऑल माई मैनेजमेंट मेंबर्स, माई चेयरमैन, ऑल माई पेरेंट्स, जिनका ट्रस्ट मुझ पर है कि सिंस 2011, और मैं 2023 में आज बात कर रहा हूँ, दिस एंटायर क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट। सर आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो काफ़ी प्लेसमेंट ओरिएंटेड, सिर्फ आजकल नहीं बहुत टाइम से ही हम देखते हैं प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड है। स्टूडेंट्स को फोकस कराया जाता है कि कैसे जॉब सीख करें रादर देन जॉब गिविंग में। तो आजकल सर मेक इन इंडिया का नारा बहुत ज़ोर से चल रहा है, ये डिकेड माना जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स का डिकेड होगा। हम लोग स्कूल से ही कैसे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं या स्किल के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं? Very right and very pointed question you ask. Actually, even if I have to see this in by the government perspective is, government is taking all the initiatives they should take. Last 6-7 years, if you see, like you mentioned, Make in India, or they want to promote the skills. And the best thing they have done कि जो उन्होंने एक नया अटल टिंकरिंग लैब इंट्रोड्यूस किया स्कूलों में। इफ़ आई रिकॉल 2016 का ये बात है, 2016 में आई थिंक 250 schools को अडल्ट टिंकरिंग लैब, इट्स अ बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड लैब which is given to all the initially to the government schools, but now it is available for the private schools also. We are very lucky कि हमें फर्स्ट ईयर में हमें ये सेंक्शन हुआ, जिसमें जो चीज़ें बच्चों को एक्सेस नहीं होती, लाइक यू आर योर सेल्फ इज ए टेक्निकल स्टूडेंट, आप IIT से हो, तो 3D प्रिंटर्स और ऑल सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो नॉर्मल स्कूल्स में एक्सेसिबल नहीं होती, बच्चों को दी जा रही है। तो बच्चों को एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस, एक नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और CBSE ने एक नई चीज़ और भी स्टार्ट किया है, जिसमें नेचुरली समथिंग समवेयर गवर्नमेंट हैज़ गिवन दिस इनपुट कि स्किल को बढ़ाया जाए और स्कूल लेवल से ही बढ़ाया जाए। इफ़ यू रिकॉल योर डेज, अगर आप 10th और 12th में एजुकेशन लेते थे CBSE बोर्ड में, इफ़ यू फेलिंग इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू कंसिडर अ कंपार्टमेंट। बट अब ऐसा नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, पर्टिकुलरली लाइक मैथ्स और साइंस में, और यू हैव टेकन एनी वन स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इन अ 9th and 10th and 11th and 12th, that subject will replace the main subject so that you will be through to the next class. तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो लाइक आपका इंटरेस्ट है
एनिमेशंस में, या आपका इंटरेस्ट है कुकिंग में, या और मे बी सम अदर इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसकी क्लासेज आप स्कूल में करिए. दैट इज अ हॉबी एज वेल एज इक्वली द मेन सब्जेक्ट. जब क्लास 12 करके बच्चा यहाँ से निकलता है स्कूलों से, लाइक देयर इज वन सब्जेक्ट व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन, शॉर्ट हैंड. शॉर्ट हैंड is not a very popular topic and popular, subject, but it is a need in every office. Even drafting of letters, ये हर ऑफिस में नीड होती है, बट इसको किसी भी स्कूल लेवल पे कराया नहीं जाता. स्कूल लेवल में चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सेक ऑफ द मार्किंग ओरिएंटेड एजुकेशन, बट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं सिखाया जाता. बट स्किल एजुकेशन में जब ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, आई 100% एश्योर इफ एनी चाइल्ड विल डू दिस, उसको इजीली क्लास 12 के बाद एक, बिकॉज एवरी चाइल्ड इज नॉट प्रिविलेज टू हैव ऑल द रिसोर्सेज. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक 12th के बाद भी उनको पढ़ना भी है और कुछ थोड़ा सा अर्निंग भी करना है. सो ये सब्जेक्ट उन बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो जाएं अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लें, पैरेलली दे कैन हैव सम जॉब, शॉर्ट हैंड का जॉब ले सकते हैं, किसी पीए का जॉब कर सकते हैं. तो ऐसे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए, डेफिनेटली दे विल चेंज द एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली. राइट सर, ये आजकल बहुत ज़्यादा रील में वायरल भी होता है कि हम लोग जैसे आईटी सेक्टर में आ गए, हम अपने टैक्सेस करते हैं, आईटीआर फाइल करना हो गया, या एनीथिंग रिलेटेड. Even this is also subject. That is what I'm trying to say. So yes. ये हमारे टाइम पे नहीं था, नहीं but था. I'm glad that it has been introduced now and that students are learning the practicalities of life. Yes. Through subjects, through courses. Yes. That is a great and that is equal deal. subject. It is not basically additional subject or SPW subject which is not considered the main subject. Right. If by chance somebody is failing in a maths and science, it will replace the main subject. So that is also biggest advantage. Compulsorily you Yes. have to go through it, Yes. which is very important for being in a society like this. Great, sir. Sir, coming to the spiritual side that you have, as much as we need students to be practical, outwards, outspoken, we also need the calmness or the humble nature that is very difficult to attain once we grow. And I mean, the age that I am right now, I really focus on it. I really try to attain it so that I have more productivity. Is there a way that you think that we can administer, or we can put these things in a very younger age so that students are more calm? They are keeping this as a very center of point when they think of things. It's really a very difficult subject, and one answer cannot be common for everyone. Right. But as a principal, as a teacher, whatever we can try, we should try. और we live basically life in a phases. अभी ऐसा ही था जैसे आप, ठीक है, कि हम लोग भी पेरेंट्स बोलते थे कि यू कम एंड सिट फॉर हाफ एन आवर एंड प्रे करो और ये करो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड आपका उतना कंसंट्रेशन नहीं करेगा. Fickle minded. Yes. और फिर यू पुट योर लॉजिक इनटू दिस कि व्हाई शुड आई गो फॉर अ प्रे, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न, बिकॉज बहुत छोटी सोच होती है ना कि मैं कुछ करूँ और तुरंत मुझे मिल जाए. ठीक है, बट over the period of these many years, what I have realized personally, but I am not saying it should be applicable to everyone, मुझे जो लगा कि सबसे बड़ी प्रे जो है वो है आपकी ऑनेस्टी. दो डिग्रीज हैं which every person should look into this. There are people those are coming from IIT and IIM and different top institute, but they lack in a one degree, that is basically the honesty of money, honesty of character. ठीक है, ये दो डिग्री अगर आप रखते हैं and along with the basically IIT and IIM, then you will supersede, you will you can reach anywhere. ठीक है, बट अगर ये डिग्रीज आपके पास नहीं है तो वट एवर यू अचीव्ड इन एकेडमिकली, दीज विल गिव द डेंट टू दोज डिग्रीज. तो स्पिरिचुअलिज्म जब स्कूल की हम बात करते हैं कि बच्चे ना सराउंडिंग से सीखते हैं, एंड सराउंडिंग इज क्रिएटेड बाय द पेरेंट फर्स्ट. बट इस टाइम पर प्रॉब्लम क्या है, लाइक अगर आप किसी बच्चे से बोलो कि बेटा यू कम, चलो चर्च चलते हैं या चलो मॉस्क चलते हैं या टेम्पल चलते हैं, तो दे हैव डिफरेंट आउटलुक. क्या फायदा जाकर? बिल्कुल. पेरेंट्स को पता है कि फायदा ये है कि हम एक्चुअली विल हैव सम कंसंट्रेशन, विल हैव सम कामनेस, विल बी बिट हम्बल, विल कम टू नो व्हाट इज गुड और बैड. इसलिए बट बच्चों को समझ नहीं आता. रीजन कि इट्स अ फाइट. मैंने एक बुक भी मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ. राइटिंग अ बुक. माय बुक नेम इज एंड इज अ बिगिनिंग. अंत से शुरुआत. तो उसमें एक चैप्टर यही है कि ये फाइट है बेसिकली
2 versus 98 का. Mummy Papa they are 2%, and the outside world for the today children it is a 98%. For example, suppose पेरेंट्स से कहते हैं कि बेटा यू कम एंड सिट फॉर प्रे, तो वो तो उसको बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि प्रे करने से क्या होगा, लेकिन व्हेन दे गो आउट एंड दे सिट विद द स्टूडेंट्स, वो उनको एक्सपोजर देते हैं, यू गो एंड मेक अ इंस्टाग्राम आईडी, यू मेक अ फेसबुक आईडी एंड यू डू दिस all kind of distractions एंड दिस नंबर इज मोर. तो 2% का फाइट 98% के साथ में है, एंड दिस बच्चा हु वाज वेरी टेंडर एज, वेरी यंग, दिस बच्चा इज इन अ कंफ्यूजन कि जो घर पे मुझे बोला जा रहा है दे आर 2 या 3 और 4, इधर दे आर सो मेनी चिल्ड्रन, इधर करने से थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी आता है, उधर करने से भी कुछ आउटपुट नहीं आता है. सो देन दिस बच्चा इज बेसिकली कम्स इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 98. तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें, किसी भी बच्चों को बोलो आप किसी ऐसी चीजों को करने के लिए, इवन यू टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स, किसी बच्चों को बोलो यू कम एंड लीव दिस कंप्यूटर गेम एंड कम एन अ फिजिकल आउटडोर गेम, सो हार्डली दे विल टेक इंटरेस्ट. सो दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइट इज गोइंग ऑन. दैट इज व्हाई अगर बच्चों को कहीं ना कहीं इस रेस से बचाना है, विच इज अ रेट रेस फॉर द चिल्ड्रन, की वो सोशल मीडिया और कंप्यूटर गेम्स और एनीथिंग विच इज बेसिकली नॉट राइट, तो उस 2% को बढ़ाना होगा. इसीलिए पुराने टाइम पे हम जाएं, बिकॉज वी वर इन अ कंबाइंड फैमिलीज, तो दे वर गुड नंबर इन अ फैमिली, तो वो लोग ज्यादा होते थे. अब किसी अगर सन को फैमिली मेंबर से बोलते बेटा दिस इज सन, एंड आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड के बच्चे बोलते नो दिस इज बैलून, तो बच्चा कंफ्यूजन में होता है कि 98% बच्चे इसको बैलून बोल रहे हैं, एंड पापा मम्मी एंड माय फैमिली मेंबर से दिस इज बेसिकली सन, तो इनके साथ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन होता है. तो इफ एनीथिंग दे वांट टू टीच, rather pressurizing child, rather pushing a child ये सीखो, they should hypothetically or artificially they have to increase the number of good people, क्योंकि अच्छा सिखाने के लिए खराब को कम करना पड़ेगा, अच्छों को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए पहले कंबाइंड फैमिलीज में ज्यादा मेंबर्स होते थे, आउटसाइड वर्ल्ड से उनको उतना एक्सपोजर नहीं होता था. अब दिस नंबर इज इंक्रीज सो मच कि नॉट ओनली द क्लास स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट्स, उनके कॉन्टैक्ट में सोशल मीडिया स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स भी आ गए. So I think this fight has become more difficult now. 2% versus 1000. Right. तो उसको कम करने का तरीका ये है कि we have to reduce this 2000 and we have to increase this 2%. And whatever the parent want to teach the children, थोड़ा सा आसान होगा. Though it's a very very difficult time for parent. I understand. I am also a principal and the father also. Yeah. It is I think most challenging time for parents. And the last advice to my parents, what they should do. थोड़ा सा चेंज अपने आप को भी करें विद द टाइम. बिल्कुल. इफ दे विल नॉट चेंज, अदरवाइज दे विल सो कन्फ्रंटेशन विद दिस सेंचुरी चिल्ड्रन और विद द पेरेंट्स नो कि वो और गैप बढ़ता चला जाएगा. जी. थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा इनमें से ही बन जाए, इन 2% 98% में पहुंच जाए, एंड देन उनका तरीका चेंज करें. So I think things will be a bit easy, but it's very difficult time for parents. Great. I mean, we got a good perspective of how do parents face these kind of situation and the spiritual nature of handling this kind of a situation. Great perspective, sir. Sir, practical knowledge over theory or curriculum in the school. Do you support this notion? And if yes, then how do you think the school plays an important role in a student's life? I think the best example this year, 2023 CBSE result, I think the evidence, the topper of one of the topper of Agra, she scored almost 98%. Anushka Mishra, she is a national shooter also. Okay. And a topper of CBSE. So how this blend is becoming actually? What I feel, you go to any school, I've been a student, you've been a student, facilities everywhere. You go to even, should not say even the government school, you will find the facilities better than 10 years before if you talk about. Yeah. Facilities improve हो रही हैं. But क्या चीज improve होने की जरूरत है? That is basically the faculty, coaches. मैं कहता हूँ आप 3 facilities रखिए. आप केवल बैडमिंटन रखो, आप फुटबॉल रखो, बास्केटबॉल नहीं रखो, स्विमिंग पूल मत रखो, आप लॉन टेनिस और एनी अदर गेम where you don't have a coach. कोच जरूरी है. फैसिलिटी 3 भी रखेंगे काम चलेगा. तो प्रेजेंट सिस्टम और प्रेजेंट स्कूल, if those are thinking, there are very good schools in India, those are doing all these. Here in G D Goenka, Agra, I think you will be surprised to know we have 16 teachers
those are teaching different games only, other than the academics. Academics is a compulsion. Right. You have to have the math teacher, you have to have the science teacher, English teachers, but something somewhere we become bit relaxed कि गेम में तो चलो 2 टीचर से काम चल जाएगा, and that is why the results are not coming. GD Goenka Agra, we have a one cricket academy which is of international level. Deepak Chahar and the Rahul Chahar, these are the two international cricketers playing in Indian team. There's so many other players playing in the district and the state and the national level. ये results नहीं आए because we are the GD Goenka. The results आए because we are the GD Goenka, but we have the coaches also. So unless coach, unless the trainer, result will not come. Yeah. So you mentioned the practical approach. Practical approach is basically when you have basically the facility and the coach. You talk about the sports, you talk about the labs. We have the ATL lab and the trainer also. That is why results are coming up. Even the science lab. So facility is just 1%, 99% is the trainers and the coaches. So I always recommend we should have less facilities, more coaches in a school. Then definitely the result will come. It will be very good, very beneficial for the students also. Great, sir. Sir, here, I have heard this concept for a long time, midday meal that happens in the government school, and I got to know that in GD Goenka also, this is a I think we are the initiator of this world. Yeah. We are the initiator. We are pioneer in this. Couple of things like there's so many things. I think when I joined the GD Goenka, I came to know. Initially, I was a bit, in this. What is the use of the AC in a school? Children should be given, difficult situation, difficult conditions, and then school should not be this goody, very in this way. They should not be like this. सुविधावादी ना Yeah, हो नहीं जाए होना ज़्यादा। नहीं होना चाहिए. But the moment I join after 3-4 months, I realize the concept behind why the school should be air conditioned. Because if you see the stamina, a person is working in a bank, working morning to evening, then naturally they have to have the good stamina. Then they can sit to the long hours. बच्चों के केस में हम क्या करते हैं, पढ़ना ही तो है, फैन भी नहीं होते, फैसिलिटीज भी नहीं होती, ठीक है. आई थिंक देयर वी नीड मोर स्टेमिना, ठीक है. तो I recall my daughter's time when she was in a class KG in a different school. When I was in another school, I was in DP at this point of time. So this was not a AC school. So when she used to come back, red face, गर्मी में आ रहे हैं, and then आते उसको सो जाना है. So करके then she used to get up around 4 o'clock, and by the time it is almost evening. तो पूरा दिन का शेड्यूल डिस्टर्ब रहता था. Now my daughter is in a class 12th. अब इतने दिनों मैंने देखा कि आई एम जस्ट गिविंग माय ओन एग्जांपल. तो अब वो शी goes back from school around 1:40, 1:45, 3 o'clock तक, 2:30 तक घर पहुंचते हैं, and that she maintains her basically this energy level. वो एग्जॉस्ट नहीं होता, because temperature आपको एग्जॉस्ट करता है. when you have a comfortable environment like winter में, if you visit any place around 2 o'clock, तो you feel like it is morning only, क्योंकि वो टेम्परेचर उतना नहीं जो आपको एग्जॉस्ट करे. बट समर में इवन द मॉर्निंग फील वेरी एग्जॉस्टेड. तो एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशन इज मस्ट, which I feel especially for students now. But outside outdoor activities, these I'm talking about basically the classes. Outdoor activities are the normal only. But because we have air conditioned classes, so we have a liberty we can conduct the sports period in the morning or in the afternoon anytime. So that after that we have enough setup, enough resources. Otherwise, those schools are not AC. What they do, they generally go outdoor activities in the morning, and then the rest of the things inside. But we have no problem of like that. So easily कर लेते हैं. You mentioned this midday meal. I think mentally we want the children should be mentally strong, but before mentally the child should be physically strong. अगर बच्चा physically strong नहीं होगा तो mental तो is a secondary. What is happening nowadays, you explore any school, it is my open challenge to you, because you're visiting so many schools now. You open the tiffin of any child, whether the bacha is coming from A category of the family, I'm a senior officer, or B category or the C category, you will have very samrasta ka bhav in the tiffin. सबका टिफिन में एक आलू का पराठा और 2 आलू या अचार या समटाइम बिस्किट और a नमकीन. It is very difficult for parents to give something rich, full of nutrients in the early morning. It's very difficult. और by chance कोई parent ऐसा प्रयास करता भी है, तो taking this tiffin
to the class and eating there is very very difficult. कितने दिन पेरेंट कर पाते, नहीं कर पाते, because schools are 7:15 7:20 का timing, and then it's very difficult for parents to prepare all this stuff in the morning. Then G D Goenka took this decision कि भाई पहले we have to see कि बच्चे का needs हम पूरा करें, फिर मतलब food का need पूरा करें. We have a full meal over here every day का all the G D Goenka schools, and they're given the morning sprouts, they're given the fruits, and they're given the all sort of vegetables which they should be given. And you will be surprised to see the children of class KG and 1, they're eating, this bottle gourd, they're eating, cucumber, they're eating, all sort of vegetables happily. Even they're eating the sprouts also. And what is the logic behind all these? If suppose you introduce sprouts back home to your young kids, what will happen? They will not eat. But the moment they come in a class, they sit in a group, they're seeing each other, they do it. तो वो बेसिकली एक एडवांटेज है. नाउ इफ यू सी इन सीनियर क्लासेस, इवन इफ आई टेक माय ओन एग्जांपल, माय किड्स व्हेन दे गो इन फॉर आउटसाइड एनीथिंग, नो दे लुक फॉर द स्प्राउट्स कहाँ मिलेगा. एक्चुअली इवन वी वर, आई पर्सनली नॉट फॉन्ड ऑफ स्प्राउट बिकॉज आई वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड स्प्राउट्स, बट दे वर इंट्रोड्यूस्ड. तो बचपन में जो हम सीखते हैं वही बेसिकली लेटर स्टेज वी एंजॉय. Like if somebody asks me, sir, you want to take a chocolate, I will deny, because chocolate was not a taste given to me at the early age. Right. I may be given the chana, or I may be all sort of doodh or pista. So I like all these tastes. So similarly, the young age, if they are given a proper food, and this is a very good message also, that parents sometimes think my bacha is mostly Maggies or paratha or all these. Actually, this is not their mistake. We given this taste to the children. जब वो छोटे थे तो हमने उनको दे दिया, and now they develop this taste. और अगर आप उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम में पिस्ता और बादाम और चना देने की कोशिश करोगे तो दे विल नॉट एंजॉय द वे आई डोंट एंजॉय द चॉकलेट. So similarly, the G D Goenka is giving a proper meal with the full, all. I mean, we have taken a lot of advices from all good health advices, and then they prepare the food menu. And the children are taking a full meal. So in the school there's a only. menu Yes, for every entire. day. Every day we have a fixed menu. We change as per the season. Like this is the season of bottle gourd, so we introduce the bottle gourd. If next season is basically cucumber, cauliflower, we use basically season-wise vegetables we take, and the dals and one sweets is every day is fixed. Like one day the children can eat, this gulab jamun. They like the gulab jamun. Even the ice cream is also there. There's different menus are there. Yeah, I wonder how kids get into the cafeteria and look at the menu. What do we have to eat today? And then that kind of excitement, grows. मेरे लिए तो सरप्राइज ये भी है because initially it was a surprise for me कि बच्चे कैसे sprouts खाते हैं. हाँ. But the concept, because they eat in a group, you put sprouts in the center, and they're saying, okay, when my friend is taking, so they will also try. हाँ. So it happens. Group में सारा चीज हम हो सब जाता कर लेते हैं. आप भी you go and outdoor, no, you eat so many things which you generally don't eat at home. Right. Seeing friends are taking, so let me also try. So it happens. Right, sir. Great, sir. You talked about having ACs in the classroom and how situation should be, such that a kid is comfortable to be in the class for a longer time and not getting exhausted. At the same time, are we also letting them know how climate change is happening, how global warming is affecting the entire thing? Are they also aware entirely of the changes happening to the climate outside? See, this is a very important and very sensitive topic, which is not only for the G D Goenka students, it is for all stakeholders now. Yeah. If we are not concerned about environment, we are not facing that much problem today because we have all categories of the children in the society. So maybe the creamy layer or the top family, those having all the amenities, they may not face today, but tomorrow they will also face. So at every level, the school level, the district level, the government level, everyone is making the children are aware what they can contribute. They're also doing our contribution. But before the children contribution, I think elder, we are enough, mature. We should think of all these. Right. As a school, we only can, they have their limitations. Like if you suppose we ask them, like if we talk about even the air condition only, you should maintain the temperature of this level, because if you keep the air conditions at home in the school unnecessarily open, naturally some things are very passing the heat to the environment only. Yeah. And how can we reduce this heat? We can have more and more plantations. So we have always these kind of drives in the schools, plantation drives weekly, plantation drive monthly, even
I can show you the one corner where the corner is given to the children. This corner is developed by the students only. They bring the plants, they put it there, and then they do the watering on daily basis, on the weekly basis. Yeah. So that they have this habit of taking care of the plants. Yes, being close to the nature Yes, is equally like important. just this, the rainy season is going to start. So we pass on one packet also of the seeds to the children. Whenever they go, they can throw out of the wherever they find at home or nearby area where they find a good open land, so that you can have a jungle there. So we do that regularly. Great initiative, sir. On the concludatory note of this podcast, sir, would you like to give some message to the younger generation or to the people who are looking at you as their idol, who think that even they can get into the education sector as teachers, as professors? What do you want to give a message to them? And what influenced me is the teaching, basically, because I'm not accidental teacher. I am basically born teacher. Maybe the conditions were such when I was in a class 10th, I was taking tuitions. But I realize if you're true to this profession, no, society will be everything. That is the reason yesterday I was sharing with my teachers. This is the only profession where एक महीने का छुट्टी हम लोगों को मिलता है. And nobody is opposing this. Nobody is doing agitations in the city कि इनको एक महीना छुट्टी टीचर्स को क्यों मिलता है. Reason behind this, because everybody understand that they are the basically nation maker, builder. Yes. They are the king makers actually. They understand what kind of community they are in now. But now these people have to understand, I mean teacher, they have to understand कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है उसको ऑनेस्टली करें, ईमानदारी से करें. जहाँ तक सीखने की बात है, इट इज़ नॉट ओनली कि दे शुड लर्न फ्रॉम मी ओनली. हर किसी के अंदर कोई ना कोई तो अच्छाई है. There are some good points with you, there are some good points, the person handling my camera, he also has so many good points. हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है. उनकी अच्छाइयों को हम लोग देखें, उनसे सीखने की कोशिश करें. But which I said in the beginning also, the 2 degrees if anybody can maintain: honesty of money, honesty of character. अगर 2 चीज़ों को हम कम से कम ध्यान लें, तो whatever we require as a student in our life, whether you child is go for only just class 12th, along with these 2 degrees, कहीं भी आप रहेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे. और आई तो बोर्न एवरी बर्थ एज ए टीचर ओनली. मुझे तो टीचर ही हमेशा बनना है. और क्योंकि जो रिकॉग्निशन, जो रिस्पेक्ट आपको इसमें मिलता है, शायद ही किसी प्रोफेशन में मिलता होगा. आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने मुझे ऐसा काम करने का मौका दिया, और बार बार मुझे टीचर बनना चाहता हूँ. बिल्कुल सर, आई रेस्पेक्ट teachers. I respect who are the king makers. They play a bigger role in the society. Thank you so much for having this conversation with me. It was delightful. Thank you so much.